Now, Bachu, we shall be discussing a little bit the question answers that are given here, only briefly. And you will be writing the answers after reading the whole chapter once again on your own. जैसे the very first question here is कि why was Kezia afraid of her father? Kezia अपने पापा से इतनी डरी क्यों रहती थी? And you know that it was due to Kezia was afraid of her father because of lack of communication between Kezia and her father. क्योंकि Kezia's father did not talk to her much, except that casual kiss in the morning when he went to office, and thereafter when he would get back, he would just stretch himself on the sofa, and Kezia would go and take off her shoes. That was the only interaction. And on Sundays, what was it like? It was like her father would be stretching on the sofa and with a hanky over his face, he would lie on the sofa. And what would her mother do? Her mother would be busy reading books, etc. And nobody took care of Kezia. Nobody interacted with Kezia. So that was the reason. That was the reason because of which they could not have a proper interaction, and that is the reason why Kezia was very much afraid of her father. इसीलिए वो अपने पापा से बहुत डरती थी और उसको उनके हाथ पैर बड़े लगते थे, जाइगेंटिक लगते थे, जायंट की तरह के लगते थे, और जब वो मुंह खोलते थे इसीलिए वो उनको वो टेरिबल सीन लगता था. और ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज शी वाज बीटन by her father with a ruler. So that was also one of the reasons why she became fearful of him. आप इसको टेक्स्ट को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा. ध्यान रखिएगा जैसे पास्ट इंडेफिनिट पे लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही इसका आंसर लिखिएगा कॉपी में, नोटबुक में. नाउ हु आर द पीपल इन केजिया's फैमिली? आपको पता है 4 लोग थे केजिया की फैमिली में. केजिया को थी, उनकी मदर थी और उनके फादर थे और उनकी दादी थी. उसके अलावा एक एलिस कुक जो है वो भी, शी वाज देयर इन हर फैमिली ओनली. नाउ व्हाट वाज केजिया's फादर्स रूटीन? मैंने आपको बताया कि केजिया के फादर का रूटीन क्या था कि वो सुबह को जाते थे कैरियज में अपने, ही वुड गिव अ कैजुअल किस टू केजिया एंड देन ही वुड गो टू ऑफिस एंड शी फेल्ट रिलीव्ड एट दैट टाइम. और उसके अलावा आफ्टरनून में जब आते थे तो इट वुड बी केजिया हु वुड गो टू टेक ऑफ हर शूज, क्योंकि उनकी मदर कहती थी. और ऑन संडेज का मैंने बताया था कि आफ्टरनून में ही वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द सोफा एंड देन ही वुड cover his face with a handkerchief, and his mother would be, her mother would be busy reading newspaper or magazine, etc. Now, in what ways? Fourth question है, in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? यानी कि केजिया की ग्रैंडमदर ने उसे किस तरह से हेल्प करी कि अपने फादर को बेहतर पहचान पाए. एक तो ये कि शी वुड, इट वाज हर ग्रैंडमदर हु वुड सेंड केजिया टू हर फादर टू टेक ऑफ हिज शूज. और दूसरी चीज ये है कि जैसे व्हेन फादर्स बर्थडे वाज कमिंग, तो it was she who asked Kezia to make something as to be presented to him as a gift. So this is what, and this is how you see grandmother would always appreciate. अच्छा, another thing was कि जब उसकी पिटाई भी हो गई उसके बाद भी it was she who explained to her the real situation and her father's viewpoint. So that is how you see her grandmother helped Kezia in understanding her father better. अच्छा, ऐसे ही बच्चों फिर उसके अलावा डिस्कशन के लिए दिए हैं. फिर about the language they have given, you must see them and try to fill them because they will be very easy sentences. Just check them from your dictionary also, word meanings and all that. You must take down the tough word meanings also. और बच्चों, now at the end I must suggest you, I must tell you that this board is here with you, with us. So from tomorrow onwards we shall be taking up writing work. मैं बेसिक्स बताऊंगा आपको ग्रामर के. कल से ये लेसन अब पूरा हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस करे.
आप इनको इन डिटेल देखिएगा इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी के छोटे क्वेश्चंस भी। थैंक यू सो वेरी मच।